Hey everybody, how's it going? I have a question. How many more sports based films are we going to be subjected to? I'm talking about Liger. This is a movie that follows the same old tropes we see in every sports movie. The same underdog story, the same guy who comes from a poor neighborhood, a bad neighborhood, and wants to make it big. The same training montages, the same one dimensional love story, and a coach who believes in him but plays second fiddle the whole way through. Liger didn't roar, at least for me. Ooh, we have our very own Liger. At least I am not Sala Liger. I was so appalled and I wasn't ready for it. This whole Bollywood industry, South film industry, they were all waiting कि a crossover event hoga and it's going to create fireworks. At least this is what the whole hype and momentum was. Vijay Deverakonda, Karan Johar production. कि ये पता नहीं क्या bomb फोड़ेगी box office में. There were no bombs. There were no dhamake. It was poo. Dharma, after a long time, they are creating this pan India beauty कि जहाँ पे really two industries इकट्ठे आ रहे हैं because we have seen Karan has been this distributor, promoter, producer and acknowledger of बीट RRR बीट बाहुबली लेकिन जब फाइनली ये हो रहा है कि जहां पे आप एक टैलेंट लेके आ रहे हैं इतने बड़े लेवल पे लेके आ रहे हैं एंड विजय देवरकोंडा जिसकी इतनी बड़ी मैसिव फैन फॉलोइंग है उसको आप लॉन्च पैड दे रहे हैं और आपने ये क्रिएट किया है पहले तो स्टोरी एक लाइगर होता है he has a speech impediment which if you ask me was the only interesting part of the movie. मेरे हिसाब से पूरी मूवी इस पे दिखानी थी कि कैसे वो struggles overcome करता है या नहीं करता but incorporated more. यहाँ पे ना एक characteristic बन के ही रह गया वो and that was it. जो director है he put a haphazard storyline together because he also co-wrote the story. He is like a big name in the South film industry. इन्होंने like decades काम किया है. I don't understand how a big name like Puri Jagannadh when he was making this movie, cutting this movie, he didn't see कि मैं क्या piece कर रहा हूँ, ये क्या हो रहा है, कितना left field दिया जा रहा है. I don't think Vijay Deverakonda signed up for this to be his Bollywood debut. If he did, there's some serious thinking that needs to be going on because यहाँ पे वो same story चल रही है घिसी पिटी. There's a small town kid. He comes from the bad side of the neighborhood. He wants to make a name for himself. वो कैसे अपनी तैयारी करता है. He wants to be an MMA fighter क्योंकि his dad was an MMA fighter. लेकिन उसके बाद क्या? It was so one-dimensional. The whole movie was a series of different fight scenes. That's it. Those fight scenes interwoven with dance numbers, haphazardly baked love story, and over-the-top dialogues. एक dialogue था, ये tiger और lion की औलाद है, cross breed है मेरा बेटा. Cross breed. I think the purpose of this dialogue was to be like, oh shit, yes, here we go. Like, no, it was so melodramatic, so over the top, so cringy. And एक Ananya कहती कि oh he's doing kung fu. Is he Chinese? Really? Like what the hell is all of this? एक department इस movie का मुझे सही नहीं लगा. Whether it was direction, whether it was story, whether it was dialogues, it was cringe fest. To me that's not even a sports film. या तो आप मुझे बोले ये MMA स्टोरी है या आप मुझे बोले ये लव स्टोरी है या आप मुझे बोले कि ये अंडरडॉग स्टोरी है या मुझे बोले ये नेशनल स्टोरी है. It is mix of everything and the khichdi is so tasteless क्योंकि लगता है set of pieces are just being put together. माँ अपने बेटे को लेके आती है शहर में they start doing this टपरी thing. वो MMA कोच के पास जाते हैं कि जी इसको तुम्हें ट्रेन करना है तुम्हें इसके मरे हुए बाप की कसम. Like seriously अगर आप इसी स्टोरी लाइन के ऊपर आना चाहें क्योंकि for me like you said वो जो कैरेक्टरिस्टिक है स्टटरिंग की वो एक कैरेक्टर आर्च जरूर देती है एंड कुडोस टू विजय देवरकोंडा दिस आई हैव टू गिव इट टू हिम कि उसने अच्छा काम किया इस चीज को लेके लेकिन दैट्स टू इट. ट्रेनिंग स्टार्ट होती है सडनली ही फॉल्स इन लव. प्यार में आते तो ही इज सो मिसोजिनिस्ट इन लव क्योंकि देन वी सी द रिटर्न ऑफ पूरी जगन्नाथ जहाँ पे हीरोइन हैज टू बी डिम्जल इन डिस्ट्रेस के जहाँ पे उसको पता है कि शी नीड्स टू बी डिट्सी. शी इज अ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर जिसको ABCD भी नहीं पता. She gets up in the morning and says where's my vodka and then there is
Cringe-worthy dialogue to which I felt so uncomfortable. Every inch of my body is in ratio. Please measure it with tape. And I was like, no, no way. We are not measuring anything here. अगर कुछ चीज measure करने लायक है, वो है talent or acting ability. And can I just say, we are coming short on that. Before we get to that, let me just say, ये जो speech impediment की हम बात कर रहे हैं, मुझे लगता है that's a beautiful thing. कि जो इंसान अपने रियल लाइफ में इतने ऑब्स्टिकल्स के साथ बोलता है to get his opinion across, in the ring he can get every single opinion across no problem. So जितनी strength वहां ring में है उतनी मुश्किलाहट उसको real life में होती है to speak. So he speaks using his body and they should have focused on that. That would have been an endearing story. And ये जो struggle है, बाप नहीं है, he was a MMA fighter, अब माँ के साथ है, उनका एक छोटा सा stall है, माँ के सपने वो पूरा करना चाहता है, खुद के लिए वो कुछ करना चाहता है. That's a beautiful story. पर यहाँ जैसे quilt नहीं होता, हर एक पैच वो सीते हैं and it makes a picture. American quilt, especially, yeah. Yeah, this movie is like that. चलो थोड़ा action डालो. Show his ripped physique, which can I say? He looked like an MMA fighter. Let's put that fierce ma. Let's put that ditzy girlfriend who doesn't have a brain यार. जैसे वो ना 90s में cliched high school girls होती थी ना, that's what she is, which is really sad because गहराइयां में I liked Ananya. मुझे लगा अपने acting career में she's turning a new page. She's gonna do more serious work. She's gonna pay attention to her craft. Lekin this movie is cut and paste of every other Ananya Panday role. Wahi glamour, beautiful face, amazing hair, and that's it. The character seems so airheaded. There's not a single thought running in the brain. And social media influencers ऐसे होते हैं, maybe, but that's a stereotype and they keep playing on it. The character written for her is either done by somebody who doesn't know ABCD of social media or is too misogynist. It's more than the director, it's more than the writing now. क्योंकि करण जौहर एज अ प्रोडक्शन टीम जब आप पोस्ट कोविड इतनी बड़ी मूवी रिलीज करे, ही शुड रियलाइज कि थिंग्स हैव चेंज्ड. दिस मूवी कुड हैव बीन डंप्ड इनटू ओटीटी क्रैप जहां पे बहुत सारी मूवीज उन्होंने डाली हैं. तो आप इसको भी देखते हैं कि अगर आपने रिलीज करनी है पैन इंडिया और आप इतने बड़े मैसिव लेवल पे जा रहे हैं, एंड आई फील लाइक जो तानिया का कैरेक्टर था, इट हैज बीन easily compromised to glorify Liger only. कि Liger हीरो है. तो विजय देवराकोंडा की स्टार वैल्यू को शाइन करने के लिए तानिया का कैरेक्टर डालते हैं, ये कह के कि शी इज जस्ट अनदर पीस, खूबसूरत खिलौना हो तुम. इन टूडेज डीएनए जहां पे अनन्या पांडे एंड दिस बॉय विजय देवराकोंडा दे वेंट टू करण जौहर शो, वहां जाके दे वर सो कॉन्फिडेंट कि जी हम ऐसी मूवी बना रहे हैं, आप प्रमोट करते हैं. अनन्या पांडे वहां बैठ के कबीर सिंह के बारे में बोलती हैं कि मैं ऐसे करेक्टर आपको पसंद नहीं करती. तो हाउ कैन यू से यस टू दैट करेक्टर? तानिया का आपको इतना पता होना चाहिए जब आपके सामने ऐसी स्क्रिप्टिंग आ रही है, यू शुड हैव रेज्ड योर ओपिनियन और यू शुड हैव given your red flag. Even that mother's character, come on. मुझे लगता है शिव गामनी का गरीबों की शिव गामनी चल रही है. Any second she will be like महेंद्र बाहुबली, क्योंकि साला लाइगर या तो she is beating him up या फिर उसको ब्रेन वॉश कर रही है. And too loud. I feel bad for Ramya Krishna क्योंकि she is also a great actor. These artists should stop this buffoonery, ठीक है, क्योंकि बड़ा बैनर है और क्योंकि डायरेक्टर पुरी जगन्नाथ है. एंड पुरी जगन्नाथ, लेट मी टेल यू कीर्ति, ही हैज द मैसिव हिट्स ऑफ 2 टाइम्स. जैसे पोकीरी आई हैव सीन जो वांटेड बनी, दिस टेम्पर जो सिम्बा बन जाती है. लेकिन लेटली मैंने उनकी फिल्म देखी थी, आई रिमेंबर आई स्मार्ट शंकर, वो राम पोतनी की फिल्म थी जहां पे ही इज टू मिसोजिनिस्ट. तो नजर आना शुरू हो गया था कि उनकी मूवीज में फीमेल्स का ये करेक्टर है. I felt, so devastated and actually feel bad for, Karan Johar also. एक तरफ Dharma production has a share shah जो finally gives respect or appreciation जो Karan Johar चाहते थे, and he said this in his show. उसके बाद Liger, really, I think the director Vijay, Karan, they thought कि हम तीनों ने इकट्ठे आना है और automatically एक hit बन जानी है. They have forgotten in pandemic times we have access to so much content. हम ना अपना time waste करना चाहते हैं, so much platforms, ना पैसा waste करना चाहते हैं, और यहाँ पैसा भी waste हुआ है, time भी waste हुआ है, क्योंकि expectations इतनी high थी
कि wow, this is an icon from the South film industry. Arjun Reddy के बाद he is soaring. Because the expectations were here, it came crashing down. Ramya Krishnan is such a good actress, good performer. यहाँ पे she was so over the top. Her expressions were so loud. मुझे लगा her eyes are probably hurting क्योंकि she was popping them so much. जैसे 80s and 90s में होता था, those melodramatic, over the top dialogues, expressions. The biggest contrast, the biggest problem is कि जो male है, जो hero है, he's a liger, tiger, lion, ferocious. दूसरी तरफ है female actress, heroine, जो toy है. She doesn't have her self-will. She doesn't have self-esteem. Because why would she be okay with being called a खिलौना? कोई खुद का दिमाग नहीं है इसका. She's only there to serve the hero's plot. The hero is doing this patriotic thing. He goes to successes. He has accomplishments. He has the Indian flag. Great. Amazing. From there, they land up in Las Vegas. Las Vegas mein Mike Tyson shows up. Mike Tyson, I have seen so many of his bouts. He's a famous boxer. उसकी इतनी जो fights थी ना, हमने pay-per-view में देखा था बैठ के. And then Mike Tyson is known to be a super badass, eccentric. एक fight में तो he bit Evander Holyfield's ear off. Yeah. So this is his character. यहाँ पे it was so jarring to see him in a cowboy hat and these old Western clothes, that old Hollywood Westerns, they had them, not now. And मैं Vegas में 2 बार गई हुई हूँ. I haven't seen any of this attire. Maybe मुझे strip छोड़ के थोड़ा outskirts में जाना था. Maybe वहाँ दिखता ये सब. मुझे Vegas में तो ये नहीं दिखा. It was just weird. For me, growing up here, I was a little excited कि Mike Tyson क्या कर रहा है इधर, पर मुझे समझ नहीं आया कि इंडिया से Vegas क्यों, out of all places. And it just felt like, चलो हमने कहीं जाना है तो वेगस बना देते हैं. This is, a big showtime city. यहाँ पे बहुत कुछ होता है, entertainment भी होती है, मस्ती भी होती है. चलो विजय को भी यहाँ ले आओ, माइक टाइसन को भी यहाँ ले आओ, and it'll do fireworks. तभी तो बोल रहा हूँ कि मुझे बुरा लग रहा है करण जौहर के लिए. जस्ट इमेजिन माइक टाइसन को हायर करने के लिए उस हाफा सीन के लिए कितना पैसा खर्च किया गया उन्हें. ठीक है, और जब आप इतना पैसा खर्च कर रहे हैं एंड यू आर मेकिंग हिम दिस द गुड द बैड द अगली का वो जो पूरा अवतार चलता है और वो जो मार्क हैंडरसन का कैरेक्टर डाला गया है. माय प्रॉब्लम अगेन, there is this entire sequence जहाँ पे there's a bunch of women after the bout, वो जाके उसको मार रही हैं. they are beating विजय देवरकोंडा and the dialogues. Now, what did I do to you? Did I impregnate you and then then I abandon you? आप जब इस तरह के statements डालते हैं just to show him as in the highlight of hero, तो वो इतना गलत कंटेंट जाता है. अनन्या पांडे जब बैठ के बोलती हैं कि मूवीज हैव दिस छाप ऑन द ऑडियंस, इसके रेपरकशंस होते हैं, सोशल कॉल होती है. तो आप जब ऐसा कैरेक्टर पोर्ट्रे करने लगी हैं जहाँ पे बंदा हॉकी लेके आपको मारने आ रहा है जस्ट बिकॉज यू आर सेइंग नो और यू आर ब्यूटीफुल खिलौना, और आप इस तरह प्रेजेंट कर रही हैं, तो लड़कों को आज के आप ये सीख दे रही हैं कि ओके फाइन, he will become a hero to do all these traits, which is not true and which shouldn't happen. Even to the brother, ये जो अनन्या पांडे का भाई बनाया हुआ है, उसको बोलता है तू मुझे गिफ्ट देगा तो मैं तुझे रिटर्न गिफ्ट दूंगा, तू मुझे किस देगा तो मैं तुझे लिप किस दूंगा. एंड बाय दैट you know what he meant कि अगर तूने मुझे हाथ लगाया तो I am entitled to touch your sister. That's what he said. तो वो इतना ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है, इतना मिसोजिनिस्ट है जिसकी याद नहीं है. Maybe this has nothing much to do with the story. मुझे लगता है अगर आपने माइक टाइसन मूवी में डालना है, this iconic boxer, full action दिखा दो हमें उसका. This whole time when I saw, the posters or images of Mike Tyson coming with Vijay Deverakonda in this movie, मुझे लगा इनका कुछ action sequence होना है, इनके बीच में fight होनी है. He's gonna overcome Mike Tyson and then he's gonna rise to the top of this MMA world. So I was even more disappointed कि Mike Tyson जैसी personality लेके आयो and you didn't use him. They could have gotten any person and made him this character. सिर्फ आपने एक स्टार वैल्यू देनी है and you are wasting so much money. या तो आपकी स्क्रिप्टिंग इतनी तगड़ी है कि उसके आने से स्टार वैल्यू मिलनी है, तो I could have understood. यहाँ पे तो कैरेक्टराइजेशन ही कोई नहीं है, कोई कंसिस्टेंसी नहीं है, कोई कोहेरेंस नहीं है, nothing is going on, just set of pieces. The music, ना तो उसकी जरूरत थी, वो क्यों था, और जो था
द लाइगर थीम सॉन्ग हो जाए, चाहे वो दिस अकड़ी पकड़ी, व्हेन आई सॉ अकड़ी पकड़ी फॉर द फर्स्ट टाइम व्हेन इट वाज रिलीज, आई थॉट दिस इज नॉट विजय देवरकोंडा's number, that is Allu Arjun song, क्योंकि अल्लू अर्जुन is a brilliant dancer, तो शायद इनको लगता है विजय देवरकोंडा को नचा के दिखाएंगे. It was totally bizarre, and the only song that I loved was Afat. Yeah. But yet again in that song वो लड़की बोल रही है बीच में डायलॉग डाले में, भगवान के लिए मुझे छोड़ दो. तो आप क्या दिखा रहे, जवानी तेरी आफत, शी इज सेड्यूसिंग हिम एंड सडनली सेज भगवान के लिए मुझे छोड़ दो. Yeah, तो mixed इतनी signals. ट्रबल जब आपने दिखानी है, करण जौहर हाउ डिड ही से ओके टू दैट स्क्रिप्टिंग, वो क्या फेथ था कि मैं ये पैन इंडिया क्रिएशन करूंगा. इट वाज पैन इंडिया मेस. Forget Karan Johar's Sorry. sadness for a second. I am very sad for Ronit Roy. Ronit Roy इतना brilliant actor है. Obviously. हमने कितने years से देखा है. But the last 2 installments I have seen of him, Shamshera, अब now Liger, utter disappointment. उसको ना utilize करते हैं, ना उसको कोई meaty character देते हैं. I don't know why Ronit is choosing these movies. What is he getting out of them? They're big banners, yes. Big heroes, yes. But अपना क्या? He's so brilliant. यहाँ पे उस कोच का रोल कोई भी कर सकता था. जहां तक विजय की बात है, he looked the part. His body was amazing. He's a good-looking guy. He even worked hard on the speech. लेकिन जब स्टोरी इतनी बकवास है तो कितनी भी अच्छी एक्टिंग कर लो ना, it's not gonna make that much of an impact. I feel like सारा blame यहाँ करण जौहर पे आना है. Karan Johar is a bad producer. Karan Johar is the reason Bollywood sucks. अगर मुझे पूछो, the 2 people most responsible should be the director, Puri Jagannadh, and the actor, Vijay Deverakonda. Why? क्योंकि अगर ये मूवी सक्सेस होती, ब्लॉकबस्टर होती, they would have been reaping all the benefits, they would have gotten all the adulation, the credit, love. अब जब Liger flop हुई है, they should take the burden of the blame and not just put it on Karan कि he's the producer or इसका fault है. No, Karan Johar is not the one who came with the script. Karan Johar is not the one who okayed all of these scenes. Karan Johar is not the one who made this his passion project. The director is equally involved. The hero is equally involved. So why is Karan the one always getting the brickbats? जब से वो डिबेट चल पड़ी हुई है कि he is a mafia, that is why he becomes this easy target. And when I talk about easy target, I think easy pick है रोनित रॉय भी, क्योंकि उनको देख के मुझे लगता है कि ओके फाइन, चीयर लीडर चाहिए रोनित को पकड़ लो, अच्छा मोटिवेटर चाहिए रोनित को पकड़ लो, कोच चाहिए रोनित को पकड़ लो. इवन इन ठग्स ऑफ हिंदुस्तान ही वाज देयर एज अ साइड किक. फॉर व्हाट रीजंस? जब आपको मौका मिल रहा है बड़े बैनर के साथ, choose wisely. Yes. Have the power to say no. And मुझे पूरी जगन्नाथ को ब्लेम करना पड़ेगा, मुझे स्क्रिप्ट को ब्लेम करना पड़ेगा, मुझे आर्टिस्ट को ब्लेम करना पड़ेगा. बट टू दैट पॉइंट जहां पे विजय देवरकोंडा की बात हो रही है, kudos to the transformation, kudos to the effort, yes, the speech work, but that stuttering did not add any flavor to me after a point. He should have done that because you are getting the maximum bucks. Yes. आपको सबसे ज्यादा पैसा मिल रहा है, you are charging this much money, so you better do it. एक recent film थी जिसमें speech impediment था, that was Hichki with Rani Mukherjee. The whole movie was based on that. Her struggles, her accomplishments, her characterization, the way she approaches life. यहाँ पे, why did they not do that? I think that would have been perfect for this movie. Instead, they made it a cliche sports film जहाँ लड़की जो है वो side piece है, उसका कोई मतलब ही नहीं है, वो ना भी होती स्टोरी में कुछ फर्क नहीं पड़ना था. जो माँ है वो भी stereotypical 80s की फिल्म की माँ थी. I plead to the Hindi film industry, stop making sports films. And अगर बनानी है तो अलग ढंग से बनाओ. Don't show us the same stuff. एक क्रिकेट की मूवी आ जाती है, फिर 10 और क्रिकेट की मूवी आती है, एक दंगल आ जाती है, फिर रेसलिंग आती है. So please, can we stop this? Show us something new. Be creative. And I plead, stop testing our intelligence. I take my brains at the theater. I have my agency. So stop challenging that. कि कुछ भी बेचोगे, कुछ भी पेलोगे, निकल जाएगा. मुझे ये नहीं समझ आ रहा. Are Ranbir Kapoor fans more disappointed in Shamshera? Or are Vijay Deverakonda fans more disappointed in Liger? For me, I think it's Ranbir Kapoor क्योंकि वो इतने सालों बाद आया था और फिर शमशेरा लेके आया था. हमको हाई होप्स रखने नहीं चाहिए क्योंकि जब हाई होप्स होते हैं फिर एक्सपेक्टेशंस होती हैं. अगर रखोगे ही नहीं तो क्या एक्सपेक्टेशंस? फिर तो हर मूवी अच्छी लगेगी.
I am disappointed at Shamshera, but I'm offended at Liger. This tested my intelligence to another level. हमें comments में बताइए, what do you think? Did you like this movie? If you did, what did you like? Do you agree with our points? Do you disagree? मुझे लग रहा है OD 50-50 होना है. Some people will agree with us and some people are going to hate us for this, but it doesn't matter क्योंकि ये हमारा opinion है. I just spoke my heart out, Kirti. So please follow us on social media. I am Puri602. OD is. Oris underscore Insta 18. And there you have it, guys. Please like, share, comment, and subscribe. And we'll see you next time with another review. Bye. Sala Liger. What the movie was? I don't know, man. I have a biggest headache.